Hello everyone. So this is our third lecture on social issues, and in this lecture we will be taking up the topic of regionalism. So like communalism, regionalism is also one of the topics in your social issues paper 2, and we will be discussing about regionalism in detail in this lecture. So what is regionalism? To start with, what is regionalism? So in order to understand regionalism, you must understand the meaning of the term region over here. Region in this word regionalism doesn't just imply a geographical region. It doesn't just apply a geographical region. Region here means it could be a geographical region, but it also denotes a sense of unique culture, a sense of identity which is related to any unique culture, any language, any sense or lifestyle of living related to a particular geographical region. So region would have a very multifarious meaning over here in the term regionalism. It doesn't just denote a geographical region, but a particular sense of identity which is related to that region, its culture, its language, etc. So, what is regionalism? It is a strong attachment to one's own region. Region here could stand for any geographical region which will be known by its unique language, culture, and a sense of common identity. Okay, so it is an expression of common sense of identity and purpose by people within a specific region, united by its unique language, culture, language, etc. Like for example, if you would see that India is such a diverse country, we are having so many different kinds of cultural diversity over here, so many kind of languages which are out of which there are only 20, there are 22 officially recognized language in our constitution. Apart from there are not so many dialects which are spoken in so many parts of India. And if you go from one state to another, you will yourself see that in two different states the sense of identity and the diversity of regions, as far as culture and language are concerned, it changes so frequently as far as India is concerned. So we are a diverse country. हमारे यहाँ इतना ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो इतनी चेंज होती है, हर रीजन में एक अलग सेंस ऑफ आइडेंटिटी है. लाइक फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से, so there are so many stark cultural differences between the kind of lifestyle people live in North India as compared to South India. Similarly, if you compare the northeast state of India with any other part of India, then the style of living, the cultural, synthesis, everything is very different. The cultural, the languages, everything is different because northeast of India is tribal dominated area. So, and even the western part of India like Rajasthan, Gujarat and everything is very different from Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is very different from the other part of India. So we know that India is a diverse country, a land of so much diversity in culture, religion, etc. And if a certain section of people, they develop a kind of a strong attachment to their own region, like for example, on the basis of the kind of culture and the languages that is spoken in the area of Tamil Nadu and other such southern states, they had developed a sense of a Dravidian identity. Why? Because their languages is called Dravidian, and their common sense of identity is Dravidian, which is very different from the North Indian identity. And they have a very strong attachment to their languages which are spoken. So, if the central government in India will try to impose Hindi or any other such languages on their native languages, which is spoken in the southern states of our India, where it is Tamil Nadu में बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, सिमिलरली केरला में मलयालम बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है. So if they have a very strong sense of attachment to their cultural identity in the southern states, okay, and they base their identity and that common sense of identity is called as a Dravidian identity, and it is very different from the Indian identity. अब नॉर्थ इंडिया में बेसिकली जो हमारा प्रोमिनेंट लैंग्वेज है वो हिंदी है, बट इफ यू ट्राई टू डोमिनेट योर हिंदी एंड यू ट्राई टू इम्पोज हिंदीज डोमिनेंस ओवर these southern states, obviously they will revolt. They will not accept it because they have a very strong sense of attachment to their regional identity, southern identity, which is based on the languages that they speak. Okay, so they have a very strong sense of affiliation to their language,
and their whole cultural identity is dependent on the language that these different southern states speak. Whether it is Tamil, if you try to impose Hindi on the Tamilian people, they will not accept it. So basically अपने रीजन को लेकर, अपने रीजनल आइडेंटिटी को लेकर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एफिलिएशन होता है लोगों में. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल दिया नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में, तो इस फीलिंग को रीजनलिज्म बोलते हैं. अब रीजनलिज्म के दोनों सेंस हो सकते हैं. एक तो होता है पॉजिटिव सेंस रीजनलिज्म का. रीजनलिज्म का पॉजिटिव सेंस क्या है? इट एनकरेजेस पीपल टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड वननेस. Why? Because if they are Tamilians will obviously feel a sense of brotherhood amongst themselves. In Maharashtra, the Marathi speaking people will obviously develop a sense of brotherhood amongst themselves because they share the same language identity. Okay, there's a great region amongst them, which is a large section of the population of Maharashtra, which is speaking Marathi. So amongst the Marathis will themselves, amongst themselves will develop a sense of brotherhood and oneness because they share a unique language identity among themselves. Okay, and they will protect the interests of that particular region, and it will promote the welfare and development of the state and its people because they have a strong affiliation and they have got a strong sense of oneness amongst each other, which is good for the unity and brotherhood of that particular region. Okay, so that is the positive sense of life. For example, हमने communalism की भी केस में positive sense भी देखा था communalism का, where that particular community, if it is working for the welfare of its own community, then that is the positive sense. Okay, but there is also a negative sense of regionalism. What is the negative sense of regionalism? It implies excessive attachment to one's own region, which is a great threat to the unity and integrity of the country. That is, for example, if you try to like आपका region, अपने region के लिए इतना ज़्यादा excessive attachment है that you kind of develop a kind of separatist or secession tendency from the nation only. Like you say that हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटी है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर तमिलनाडु के सारे तमिलियंस इकट्ठा होकर ये बोलने के लगे दैट वी वांट टू secede फ्रॉम इंडिया बिकॉज ours is a very unique cultural identity and we do not want to be part of India. We do not want any kind of assimilation with the Indian identity because हमारा तमिलियन आइडेंटिटी इतना स्ट्रॉन्ग है. और वो अपने रीजनल बेसिस पे अगर डिमांड करने लग जाए सेसेशन, तो ये एक जो होगा फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म. दिस इज द नेगेटिव सेंस ऑफ रीजनलिज्म. लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कंट्री में पहले हुआ भी है दैट आपने देखा है कि कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि रीजनल इश्यूज की वजह से या जो उनका स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन एक अपने रीजन तक रह जाता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दे हैव डिमांडेड सेसेशन फ्रॉम इंडिया. लाइक फॉर एग्जांपल अभी भी कश्मीर में भी अपनी कश्मीरी आइडेंटिटी के बेसिस पे या मुस्लिम आइडेंटिटी के बेसिस पे देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ कश्मीरी पीपल हु आर डिमांडिंग सेसेशन फ्रॉम इंडिया. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप जानते हैं कि सेसेशन और सेपरेटिज्म का कितना प्रॉब्लम है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्राइबल आइडेंटिटी वेदर इट इज इन नागालैंड और इट इज इन असम, many people are demanding separate statehood altogether, and they not just statehood, they are just they are even demanding, like for example Nagaland on the basis of Naga identity they are demanding a greater Nagaland for themselves. हमने वो नॉर्थ ईस्ट वाले प्रॉब्लम में पढ़ा भी था कि ये जो ग्रेटर नागालैंड का डिमांड है या नागालिम जिसको वो बोलते हैं, so they want to form a separate country or separate state for themselves apart, like independent from India based on their Naga identity. These जो people हैं Naga के, they even want to integrate some areas of neighboring Myanmar and they want to form a separate country for themselves, for the Naga people. तो इस तरीके का जब secessionist या separatist tendency develop हो जाता है because of the strong attachment to your just one region, that is one when regional issues जो होते हैं regional issues they become more important. I'll write it down over here. When you know the regional issues जो होते हैं आपके जो regional issues हैं वो आपके ज्यादा बड़े हो जाते हैं या ज्यादा important हो जाते हैं national issues से. ठीक है, नेशनल इश्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट जब रीजनल इश्यूज हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म. ओके, दैट आपके रीजनल जो इश्यूज हैं, रीजनल जो आपकी एक आइडेंटिटी है बेस्ड ऑन वन स्टेट, वो इतनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यू आर काइंड ऑफ बिकमिंग अ थ्रेट टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एज अ होल. एंड नेशनल इश्यूज की जगह आपने एक सब नेशनल आइडेंटिटी बना ली है अपनी इंडिया में रहते हुए भी. You can assimilate your regional identity with the national identity also. You need not develop a separate statehood or separate kind of demands for yourself. You can assimilate with the national identity also.
But if regional issues become more important than the national issues and they try to threaten the unity and integrity of the country or sovereignty of the country, that particular case is called as the negative or the extreme form of regionalism, which is actually bad for the unity and integrity of any country, whether it is India or any other country. तो रीजनल इश्यूज जब नेशनल इश्यूज से ज्यादा बन जाते हैं, सब नेशनल आइडेंटिटीज बनने लग जाती हैं, वो होता है नेगेटिव सेंस ऑफ रीजनलिज्म. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया. सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रीजनलिज्म का थोड़ा बहुत बिगिनिंग तो इवन इन ब्रिटिश इंडिया हो चुका था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था. वी नो दैट बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर अराउंड 500 मोर देन 500 अप प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया. 526 कुछ अप प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनको अल्टीमेटली ऑब्वियसली वो रीजनल इश्यूज के बेसिस पे ही उन्होंने डिसइंटीग्रेट कर दिया था पूरे इंडिया को, पूरी इंडियन टेरिटरी को. रीजनल इश्यूज के बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने इतने सारे 526 मोर देन 526 प्रिंसली स्टेट्स में डिसइंटीग्रेट कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल इश्यूज ओनली. But ultimately, after independence, we know that Sardar Vallabhbhai Patel and Jawaharlal Nehru, they together they came and they solved this problem of princely states of India, and they integrated all these princely states, and they integrated them all these princely states into one union of India. So basically, इस तरीके से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और तभी से वो रीजनल आइडेंटिटी बनने लगी कि उनके अपने रीजनल इश्यूज उनको नेशनल इश्यूज से ज्यादा जरूरी लगने लग गए. बट वो ये जो प्रॉब्लम थी तो ब्रिटिश इंडिया से ही शुरू हो गई थी, बिकॉज रीजनलिज्म इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रिलीजियस फैक्टर्स ऑल्सो. कभी कभी रिलीजियस फैक्टर्स बेस पे भी रीजनलिज्म डेवलप हो जाता है, लैंग्वेज बेसिस पे भी रीजनलिज्म डेवलप हो जाता है, लैंग्वेज आइडेंटिटी के बेसिस पे भी डेवलप हो जाता है, कल्चरल आइडेंटिटी के बेसिस पे भी रीजनलिज्म का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है. तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस व्हाई दिस प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म डेवलप्स विद इन अ कंट्री. बट हमारे कंट्री में, इंडिया में, सीड्स ऑफ रीजनलिज्म वर सोन इवन बिफोर इंडिपेंडेंस. बट मेजर जो, जैसे हमने देखा कम्युनलिज्म के केस में, जो मेजर सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म थे, दे वर सोन बिफोर इंडिपेंडेंस. इवन द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपेंड बिकॉज ऑफ कम्युनल रीजंस. ओके. सो लेकिन इंडिया में जो रीजनलिज्म का जो प्रॉब्लम है वो मेनली कब आया? इंडिपेंडेंस के बाद. दो सम सीड्स ऑफ रीजनलिज्म वर सोन इवन बिफोर इंडिपेंडेंस. ओके. So what are the reasons in growth of regionalism in India? Historical and geographical isolation. Why? Because historical factors भी involved हैं कहीं ना कहीं regionalism के लिए. So roots of regionalism in India is actually based on the diversity of languages, cultures. इतने सारे ethnic groups हैं इंडिया में. Not just ethnic groups हमारे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में नहीं है, हमारे ethnic groups even inside the country हैं. Dravidians हैं, नॉर्थ ईस्ट पीपल हैं, इतने सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इतने सारे ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स हैं विद द नॉर्थ ईस्ट. इवन इन झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह एरियाज में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज हैं. ठीक है. तो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, रिलीजन्स एंड सो ऑन है. Encouraged by the regional concentration of those identity markers and fueled by a sense of regional deprivation. So first reason behind the growth of regionalism is India is the diversity. Regional जो diversity है हमारी country में, manifold diversity of languages, cultures, ethnic groups इतने सारे हैं कि obviously उनकी अपनी अपनी separate identities हैं. Coupled with the regional deprivation, that is if one region के लोग दूसरे region के comparison में अपने आप को deprived feel करने लगे, whether it is economic deprivation, political deprivation, then that sense of regionalism starts developing. Like for example, अगर छोटा example दूँ तो interstate जो disputes होते हैं या interstate जो river water disputes भी होते हैं, they are also a kind of manifestation of regionalism only. Why? Because states start feeling that they are not getting the ample amount of share in the water resources. Like for example, if interstate river water disputes कब होते हैं? If same river is flowing between two different states like कर्नाटका में और केरला के बीच में हुआ था कावेरी रिवर को लेकर, तो if one state start feeling that they are not getting the enough or the ample amount of share in the water resources, only then they start fighting over that particular water resource. ठीक है. तो वही होता है कि एक तरीके का आपको डेप्रिवेशन फील होता है कि somehow you are lacking as compared to one state. तो उस केस में रीजनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप होती है कि आप अपने रीजन के इश्यूज को लेके इतना ज्यादा कंसर्न्ड हो that you are creating violence, you are disturbing the law and order situation of that particular country by carrying out protests and all such things you are doing. You are engaging in anti-national activities that the national integration of the country is affected. तो इस तरीके की चीजें जब होती है तो वो भी एक रीजनलिज्म है. ठीक है.
For instance, southern India, which is the home of Dravidian cultures, which itself is a region of many regions, is evidently different from the north, the west, the center, and the northeast. तो इतने stark differences हैं basically हमारे इंडिया में कि obviously regional identity, regional deprivation के basis पे develop होना शुरू हो जाती है, ठीक है. Then lopsided development and continuous neglect of a region can also be one of the reason behind the growth of regionalism that could have flourished India if any state or region had felt that it was culturally dominated or it was discriminated against. Okay, any region can feel that culturally उसका कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, या कल्चरली डोमिनेट किया जा रहा है उस रीजन को, और इट इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. ओके, देन व्हाट इज द थर्ड रीजन? रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. So regional economic inequality is one of the reasons, okay, behind this. What that it is a potent time bomb which is directed against national unity and political stability. So regional economic inequality भी एक reason होता है behind regionalism, that one state or might feel that it is not being given equal economic opportunities to develop, like for example neglect of northeast region in economic development and providing relief during disasters like flood was the reason for the emergence of secessionist movement in Nagaland, Mizoram, etc. in the country. So whenever any particular region feels that it is not being given equal economic opportunities to develop from, or the central government is kind of doing a kind of economic discrimination against a particular region, या किसी एक particular region को neglect feel होता है in the economic development, तभी ये problem create होती है कहीं ना कहीं, ठीक है. लो लेवल ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट्स ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन जब होता है तो ये प्रॉब्लम होती है. These subjects are core for human resource development. So if particular state is not doing social expenditure on education, health and sanitation facilities, then it will lag behind on these parameters. It will lag behind on these parameters, and education, health and sanitation ऐसे areas हैं which are very important for your human resource development. Okay, तो ऑब्वियसली अगर स्टेट्स लैक करेंगे और ये पर्टिकुलर स्टेट्स में डिस्पैरिटी होगी, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत स्टार्क डिफरेंसेस हैं. केरला ऐसे सदर्न स्टेट्स हैं विच आर इन्वेस्टिंग हेविली ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज. ओके, वेयरएज अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक बिहार, एमपी या आप उड़ीसा की बात करो, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मच ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन. ऑब्वियसली तभी हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि दे लैक बिहाइंड दी these southern states of Kerala and other such states on education, health and sanitation parameters. So if they lag behind, then they start feeling obviously regional deprivation, because human resource development नहीं होगा तो economic development कैसे होगा उस region का. अगर कोई भी calamity आती है, कुछ भी होता है, तो obviously the southern state will be in a better position to respond to any kind of health crisis or any kind of disaster situation that might occur, and obviously that will impact the economic well-being of the people of those particular states. So then ये भी एक reason है, ठीक है. Then regionalism also होता है against loss of economic opportunities and exploitation of resources by outsider, that gives a feeling to the people of a particular region that others are benefiting whereas they are losing. Okay, movements जो असम में हुए थे against exploitation of resources by outsiders, especially Bangladeshi migrants, एंड सन ऑफ सॉइल कंसेप्ट जो मराठीज के अंडर है एक तरीके से, वो दैट फॉल्स इन दिस कैटेगरी. सो वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स और द discontent which the Assamese people are having against the illegal Bangladeshi migrants. Why? Because the Assamese feel that these illegal Bangladeshi migrants are coming and they are encroaching upon their resources and limited livelihood opportunities. Why will they tolerate the other migrants to come and to encroach upon their jobs and encroach upon their lands and other resources? So whenever the people of a region feel that their resources are being exploited and they are not being given enough, they are facing loss of economic opportunities, they will obviously revolt and they will feel that the others are benefiting in their cost, others are benefiting on their cost. So whenever this insider outsider problem is created, then they become quite start defending their own resources and they start defending their region. That is why these Assamese people are so much against the illegal migration from Bangladesh and other part of the India, because they feel that they have got enough, they have not got enough resources, and whatever good natural resources they have, they are being exploited by the outsiders. Outsiders in this could be the Bangladeshi migrants also and other outsiders also.
सिमिलरली द महाराष्ट्र में हमको पता है कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट दी बिहारीज who migrate to Maharashtra for job opportunities, or any other people who might migrate to Maharashtra for job opportunities. Even the Marathis, based on their Marathi identity, feel that they have a strong affiliation for their region, which is called as Maharashtra. And having this strong affiliation for their region, they feel that the Maharashtra के जो resources हैं या jobs हैं वो उनके लिए reserved होने चाहिए. तो बेसिकली ये होता है सन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट. ये सन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है. बट बेसिकली महाराष्ट्र के लोग भी ऐसा समझते हैं कि that they should be given more preference as far as jobs and other resources of Maharashtra are concerned, and they feel that the outsiders are coming into their territory and they are encroaching upon their jobs and resources. So that is why even the Marathis and all, they discriminate against the outsiders who are coming into Maharashtra. Same is a kind of resentment in the Assam. So whenever people of a particular region feel that there is an exploitation of resources or loss of economic opportunities, they will develop that feeling or sense of regionalism, and they will try that unki jo territory hai, like Assam should be Assam, reserved for Assamese people only, outsiders must not be allowed. Similarly Maharashtra एंड महाराष्ट्र के अंदर जो जॉब्स हैं रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ मराठीज के लिए रिजर्व होनी चाहिए. ऐसी फीलिंग धीरे धीरे करके एक रीजनल फीलिंग डेवलप होनी, स्ट्रॉन्ग डेवलप होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. Then political and administrative failure is also one of the reason by this feeling of regionalism developed, which is a source of tension, and it gives birth to sub-regional movements for separate states. Like for example, Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand, and recently जो तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से भी हुआ. देयर वर अदर रीजंस आल्सो, बट देन दिस. तो वी हैव सीन दैट रीजनलिज्म, मतलब अभी तक भी बहुत सारे रीजनलिज्म के फीलिंग्स या रीजनलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी इंडिया में है. अभी उसको धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट कैसे हुआ, आप एक फर्स्ट एग्जांपल दे सकते हो कि झारखंड का फॉर्मेशन बिहार से हुआ था. दैट वाज बिकॉज जो झारखंड के अब पॉपुलेशन के लोग हैं, दे स्टार्टेड फीलिंग कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो रहा है, उन तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच रहे हैं. So they demanded a separate state for themselves in the form of Jharkhand. That demand was acceded also, and a Jharkhand state was formed. Similarly, Madhya Pradesh से छत्तीसगढ़ को formation किया गया because there was a demand for the formation of Chhattisgarh. So this is also a type of regionalism, only that based on their regional issues, they started demanding a separate statehood for themselves. उसको finally बनाया भी गया. Similarly, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को carve out किया गया. तो बेसिकली ये जो डिफरेंट स्टेट्स बने थे, इसके पीछे, इस रीजनलिज्म के पीछे रीजन क्या था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, जिसकी वजह से इन तीनों स्टेट्स ने डिमांड किया अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्व्स, जिसको बनाया भी गया. सिमिलरली रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट में बनाया तेलंगाना आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो formed because of political and administration failure. The people of Telangana demanded separate state for themselves. That demand was even fulfilled. Okay. So many such demands at present also are in pipeline, or they're in demand. Like for example, विदर्भा एंड सौराष्ट्र, ये बेसिकली आपका महाराष्ट्र और गुजरात का है रीजन्स, जो कि अपना एक सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर रीजनल इश्यूज. ओके. दार्जिलिंग एंड बोडोलैंड. सो इवन दार्जिलिंग के जो लोग हैं, दे आर डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल. Bodoland is a demand in Assam, that these Bodo speaking people are demanding a separate state for themselves based on their Bodo identity. Bodo is a language. Okay, then Vidarbha and Saurashtra, they are demanding a separate state for separate territory for themselves on the basis of lack of development वाला जो issue है उसके basis पे ये demand कर रहे हैं separate state. तो likewise हम देखते हैं कि अभी भी ऐसे बहुत सारे demands हैं जो different regions of country में चल रहे हैं on the so that they are forming or demanding a separate homeland for themselves. तो ये सब भी क्या है, ये सब examples है regionalism के. ठीक है. Then linguistic aspirations भी हैं, language basis पे भी बहुत सारे हैं डिमांड करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज सर्टेन सेक्शन ऑफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल हु हैड डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना. और ऐसे इस तरीके से लाइक जब आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ था मद्रास से, तो वो तेलुगु आइडेंटिटी पे बेस करके ही फॉर्म हुआ था. तो एक वो है जब हमारे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था. 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था. उस टाइम पे जो मेजर डिमांड्स थी बहुत सारे स्टेट्स की या बहुत सारे रीजन्स की डिमांड यही थी कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज there were different states that were carved out. On the basis of language, there were different states that were carved out as a result of the formation of the 1956 State Reorganization Commission. So even
जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है एंड लैंग्वेज के बेसिस पे जो उसके बाद फर्स्टली जो स्टेटहुड ग्रांट किया गया था आंध्र प्रदेश को मद्रास से, दैट इज द तेलुगु, देयर तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैड डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्व्स, उस डिमांड को मीट भी किया था. दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस इन व्हिच द रीजनलिज्म हैड मैनिफेस्टेड इटसेल्फ. So the formation of State Reorganization Commission in 1956, subsequently formation of Andhra Pradesh, that is Telugu speaking people demanding separate state for themselves from Madras, and ultimately formation of Andhra Pradesh. Okay, that is the first manifestation of regionalism in the post independent India. Afterwards हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, whether it was मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारे स्टेट्स कार्व आउट करे गए, तो वो भी रीजनल आइडेंटिटी या रीजनल इश्यूज पे ही बेस्ड थे. तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजनलिज्म. तो ये जितने भी स्टेटहुड ग्रांट किए गए हैं, बाद में छत्तीसगढ़ वगैरह बनाया गया, ये सब रीजनल इश्यूज पे ही बेस करके बनाए गए हैं. दीज आर ऑल द मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीजनलिज्म. कहीं पे लैंग्वेज वाला फैक्टर इन्वॉल्व था रीजनल डिमांड करने के लिए स्टेटहुड, कहीं पे लाइक फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश के केस में लैंग्वेज का इशू इन्वॉल्व था, मिजोरम, नागालैंड वगैरह के इशू में कल्चरल आइडेंटिटी का इशू इन्वॉल्व था टू डिमांड अ सेपरेट स्टेटहुड. लाइक फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में भी, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी बट दिल्ली इज आल्सो डिमांडिंग व्हाट, स्टेटहुड. तब जो दिल्ली में एक जो डिमांड चल रही है स्टेटहुड की कि हमें यूटी से स्टेटहुड बनना है, वो किस बेसिस पे चल रही है, वो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे चल रही है. तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे एलाइड्स और द दिल्ली गवर्नमेंट वांट्स दैट उनको स्टेटहुड मिल जाए ताकि उनको ज्यादा पावर मिल सके. दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ रीजनलिज्म ओनली. ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंट जो स्टेट्स फॉर्म हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन इंडिया, वेदर इट इज द डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया जिनको यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया गया, या आंध्र प्रदेश से, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे कई सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है लाइक आंध्र प्रदेश, या आगे आने वाले टाइम में भी और जितने भी स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब रीजनल इश्यूज पे बेस्ड थे एंड दे आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीजनलिज्म ओनली. नाउ एज वी हैड डिस्कस्ड व्हाट इज द सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन, जो कि बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है आपके महाराष्ट्र में वगैरह एरिया में. It is a form of a regionalism only. According to it, a state specifically belongs to the main linguistic group. Like for example, Maharashtrian Marathis believe that जो उनका हक है महाराष्ट्र के रिसोर्सेज पे, वो आउटसाइडर्स का नहीं है. Okay, inhabiting it or that state constitutes the exclusive homeland of the main language speakers who are the sons of the soil or the local residents. So why son of the soil का concept आता क्यों है? Because there remains a competition for job between migrant and local educated middle class youth. This theory works mostly in cities because here outsiders also get opportunity for education. In such theories, major involvement of people is due to rising aspiration, economy's failure also to create enough employment opportunities. One of the reason why the local residents are demanding that जो वहाँ का वो homeland है, उनका अपना native homeland उनके लिए ही reserved हो, वहाँ के resources, वहाँ के jobs उनके लिए ही reserved हो. तो बेसिकली ये होता है सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन, और ये बहुत सारे स्टेट्स में आजकल देखा जा रहा है. वेदर इट इज आजकल एमपी में भी ये डॉक्ट्राइन कर रहा है कि एमपी के जॉब्स को एमपी के लिए, एमपी के लोगों के लिए रिजर्व किया जाएगा. महाराष्ट्र में तो ये चीज हमेशा से है, तो इसलिए एक फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म ही है. ठीक है. Now what are the political factors behind the problem of regionalism? So India's politics and its political parties, they showcase regionalism present in our country. We know that हमारे country में national parties भी हैं and regional parties भी हैं. अब ये जो regional parties होती हैं basically इनके जो issues होते हैं formation के, वो regional issues होते हैं. ठीक है. And national parties तो पूरे national level पे काम करती है. Political aspirations of leaders, they remain a major source of regionalism. अब जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है, दे हैव यूज्ड द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज टू सिक्योर वोट्स. तो एक ये भी एक फंडा है. Attempts by the political parties to exploit the feelings to gain power. Various political outfits, they try to exploit the subnational identities, feeling of discontentment because of neglect to gain power. Like for example, हमारे अकाली दल का फॉर्मेशन हुआ पंजाब में, वहाँ के अपने लोकल इश्यूज पे फॉर्म्ड पार्टी है. डीएमके का फॉर्मेशन हुआ तमिलनाडु में, वो एक रीजनल पार्टी है, वो वहाँ के इश्यूज या तमिल आइडेंटिटी पे बेस्ड पार्टी है कि हमारे तमिल आइडेंटिटी को हमें प्रमोट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से और नेगोशिएट करना है, बार्गेनिंग करना है. उस चीज को लेकर डीएमके का फॉर्मेशन हुआ तमिलनाडु में. सिमिलरली वेस्ट बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक है, तो वहाँ पे डिफरेंट एक पार्टी है. तो इस तरीके के डिफरेंट रीजनल पार्टीज हैं. डीएमके इन तमिलनाडु, अकाली दल इन पंजाब, ये डिफरेंट जो रीजनल पार्टीज हैं वो रीजनल इश्यूज पे बेस्ड हैं. वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक लेवल पे नेगोशिएट करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए, अपने रीजनल इश्यूज को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है. तो ये भी चीज होती है. अब एग्जांपल आपको इससे समझना पड़ेगा कि जब
पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं रीजनलिज्म में, आप ये समझो कि जो खालिस्तान मूवमेंट है पंजाब में, which actually was running during 1980s, that was because of such political manipulations only. When the people of the Punjab were manipulated based on a particular political reason, and जो recent separation तेलंगाना का हुआ है उसके पीछे भी political motives ही हैं obviously. ठीक है, अब ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, आपको ये समझना है कि ये खालिस्तान मूवमेंट जो है, ये बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन दी पॉलिटिकल फैक्टर्स ओनली, दैट बेस्ड ऑन दी सिख रिलीजियस आइडेंटिटी and other political issues. There are Sikh people, a section of Sikh people who were demanding a separate country for themselves altogether different from India. तो ये जो एक खालिस्तान का डिमांड था पंजाब में 1980s में, that was because of political manipulations, to political manipulate करा लोगों को वहाँ के, ठीक है, तो ये भी एक रीजन है. Aspirations of people for political autonomy, ये भी कई बार रीजन होता है regionalism का. Many regions they want political autonomy, that is they don't want any separatism from India, or they don't want secession from India, but they want more powers for themselves. They want more power for themselves, and that is called as autonomy. Autonomy is actually a power to function independently. They want more independent powers for themselves, ranging from complete secession to autonomy within the confines of the constitution, and they have raised their voice through arms. जम्मू एंड कश्मीर में भी जो एक सेपरेटिज्म का प्रॉब्लम है वो रीजनल इश्यूज की वजह से है. नागालैंड में हमने डिस्कस करा ग्रेटर नागालैंड, या नागालैंड की जो डिमांड है नागालैंड की, वो इसी नागा कल्चरल आइडेंटिटी पे बेस्ड है कि हमें एक सेपरेट अपना ग्रेटर नागालैंड बनाना है आफ्टर इंटीग्रेटिंग वेरियस नागा स्पीकिंग पीपल फ्रॉम मणिपुर एंड अदर एरियाज ऑफ म्यांमार. तो वो भी एक जो डिमांड है वहाँ पे नागालैंड की एक अपना रीजनल स्टेट बनाने की, वो रीजनल इश्यूज पे बेस्ड है. मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट, थिंक ऑफ देम एज अ सेपरेट आइडेंटिटी विद डिफरेंट कल्चर, and interference by outside powers have further fanned the separatist movements in these regions. So जम्मू एंड कश्मीर तो हमें पता है सेपरेटिस्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारे रीजनल इश्यूज पे ही बेस्ड हैं. Now इंडिया में बहुत सारे ethnic differences भी हैं, that is also one of the reason of regionalism. The ethnic differences they have formed the base for demands for political autonomy and secession. Like for example, Nagas of Nagaland, they are demanding a nation which is based on their ethnic identity. So obviously ethnic differences की वजह से भी कहीं ना कहीं regionalism का problem बहुत बढ़ गया है. Now we will study about the type of regional movements. Like regional movements भी बहुत type के होते हैं, ठीक है. तो what is secession? Secession is a form of regionalism. It involves militant and fundamentalist group who are advocating a separation from India on the basis of ethnicity or any other factor. Like for example, हमें पता है कि जो IAS जो NSCN है, ठीक है, नागालैंड का, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने JKLF के बारे में पढ़ा था. यू अल्फा इन असम है, वी नो इट्स अ वेरी इंसर्जेंट ग्रुप इन असम. They are all demanding separate homeland for themselves, and they want to totally disintegrate from India. They want to totally disintegrate from India. They want to form a separate homeland for themselves. They are example of extreme dimension of regionalism. Okay. Then separatism is also a demand. That is actually a separate statehood but within the Indian Union. Like for example, जो झारखंड फॉर्म हुआ, ये छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ, ये तेलंगाना का फॉर्म हुआ, इनका डिमांड ये नहीं था that we want to secede from India, हमें इंडिया का पार्ट नहीं रहना. They wanted separate statehood for themselves. तो इस टाइप की चीज को क्या कहते हैं, सेपरेटिज्म, कि हमें एक सेपरेट स्टेटहुड चाहिए बट विद इन द डोमेन और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन यूनियन ओनली. सो मेनी टाइम्स लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटीज होते हैं विद इन द स्टेट्स, they come together and they unite against the majority community. This kind of sub-regionalism was validated by the States Reorganization Act of 1956, जिसके बाद लैंग्वेज बेसिस पे आंध्र प्रदेश का और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स को बनाया गया था, स्टेटहुड कॉन्फर की गई थी after 1956. So this was a form of regionalism, which is you can call as a form of separatism only. Okay. Then decade of 2000 witnessed vigorous movements for creation of separate states due to rising sense of regional deprivation. It resulted in the formation of 3 new states, Chhattisgarh, Jharkhand and Uttarakhand. So we saw that 2000 में regional deprivation या political and administrative factors की वजह से इन states का formation हुआ था, तो इनके अपने regional demands के basis पे ही हुआ था. तो इसको इस टाइप के जो सेपरेट स्टेटहुड को फॉर्मेशन होती है विद इन द इंडियन यूनियन इज कॉल्ड एज सेपरेटिज्म. इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ रीजनल मूवमेंट ओनली. ओके. देन तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ उसको भी आप सेपरेटिज्म में ही काउंट कर सकते हो. At present, there have been many demands, including the creation of Bodoland for Bodo speakers in Assam. Then there's a demand for Gorkha land for ethnic Gorkha or Nepali people in West Bengal because they feel somehow that they are being discriminated
in their own state. That is why they are demanding a different, क्योंकि obviously regional deprivation होता है. Regional deprivation का मतलब they feel that they are being discriminated, their cultural identity is not being respected. Only then they demand a separate state for themselves. Like for example, अभी जो गोरखा people हैं, इसका issue तो अभी at present भी चल रहा है. They feel that their जो गोरखा या ethnic गोरखा या नेपाली identity is not being respected and they are being discriminated, and that is why they are demanding a separate Gorkha land or separate state for themselves out of West Bengal. They do not want to secede from India. Secession का problem हमने देखा, वो even Jammu and Kashmir में भी है. जो fundamentalist group है Jammu and Kashmir के, they want to form a separate country for themselves away from apart from the Indian Union. But separatism या statehood होता है within the Indian Union. तो ये जो गोरखालैंड वगैरह के इशू हैं, ये सेपरेटिज्म में काउंट होते हैं. They want a separate statehood for themselves. They do not want to secede from the Indian Union. Okay, so there is a difference between secession and separatism. अब बुंदेलखंड स्टेट फॉर्म होना चाहता है कवरिंग पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, बिकॉज दिस रीजन फील्स दैट ओके इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये सारे अभी भी डिमांड्स हैं वेरियस रीजन्स में कंट्री में. डिमांड फॉर ऑटोनॉमी क्या होता है? इट्स अ फोर्थ टाइप ऑफ रीजनलिज्म. ये 1960s से चल रहा है. इट इज बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज. Demand for state autonomy, that is they want more and more powers for themselves. They do not want to form a separate state, they do not want to secede from India, but they want more independent powers for themselves. That has been gaining more and more strength due to central political interferences. Like for example in Tamil Nadu जो DMK की पार्टी है, या पंजाब में अकाली दल है, ये सारे लोग जो हैं ये बेसिकली more autonomy चाहते हैं from the central government. They want more power to govern their own states. तो ये भी एक तरीके का रीजनल डिमांड ही है. ठीक है, तो 4 टाइप के हमने रीजनल के डायमेंशंस देखे कि रीजनलिज्म किस 4 टाइप का होता है. ठीक है, फिर इम्पैक्ट क्या है रीजनलिज्म का ऑन इंडिया. तो रीजनलिज्म का बेसिकली जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में है कि जो रीजनलिस्ट टेंडेंसीज होती हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, और हर एक जगह डिफरेंट क्या कहते हैं कल्चरल बिलीफ्स हैं, and कितने ज़्यादा वेरिएशन है in India, in the different parts of India, as you can see in this picture over here. Okay, now regionalist tendencies क्या होती हैं? They stir interstate hostility. Okay, obviously if you feel regional deprivation, one state feels against another, तो एक interstate hostility develop होती है. इसका एक एग्जाम्पल इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं, जो एक वाटर रिसोर्सेज को लेकर कहीं ना कहीं एक स्टेट दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में डिप्राइव्ड फील करता है, तो एक इंटरस्टेट हॉस्टिलिटी क्रिएट होती है. तो ऑब्वियसली इंटरस्टेट हॉस्टिलिटी. रीजनल मूवमेंट्स दैट रिजल्ट इन वायलेंट एजिटेशंस, इट डिस्टर्ब्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, and it also has negative implications on the economy of the state as well as the nation. Then it can regionalism can weaken the tested fabric of unity in diversity. Obviously it gives internal security challenges by the insurgent groups. Like for example, अब हमने असम का केस पढ़ा था जो एक secession का example है कि ULFA. So what they are doing, these are insurgent groups only. They are obviously disturbing the internal security situation of the country. They propagate the feeling of regionalism against the mainstream political administrative setup. Okay, then what is the positive effect of a positive impact of regionalism? That if you are trying to develop your territory or your part or your region, economic social development, आप अपने region को करना चाहते हो, that is one of the positive impact of regionalism, and that is not considered harmful. Okay, regionalism, it also plays an important role in building of the nation as the demands of the regions are accommodated by the political system of the country. Like for example, अगर आपके regional issues सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे लगते हैं, या फेडरल जो हमारे फेडरलिज्म को अफेक्ट नहीं करते, बेसिकली रीजनलिज्म फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए. जो आपके रीजनल इश्यूज हैं वो नेशनल इश्यूज से इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए. वो जो एक फैब्रिक ऑफ फेडरलिज्म है इंडिया का, वो फैब्रिक ऑफ फेडरलिज्म मेंटेन रहना चाहिए. ठीक है, और फैब्रिक ऑफ फेडरलिज्म कब मेंटेन रहेगा? जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपके डिमांड को समझेगी एंड इट विल ट्राई टू अकोमोडेट दोज डिमांड्स, इंटीग्रेट दोज डिमांड्स विद द नेशनल इश्यूज आल्सो. ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है रीजनलिज्म का कि अगर आप अपने पर्टिकुलर रीजन का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई स्टेप गवर्नमेंट से मांगते हो या डिमांड करते हो, तो दैट द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अकोमोडेट. ओके, दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. Now, what are the solutions to contain this problem of regionalism? जैसे कि हमने देखा कि कई सारे different states हैं, कई सारे ऐसे different regions हैं जो अभी भी डिमांड कर रहे हैं, secession डिमांड कर रहे हैं, separate statehood डिमांड कर रहे हैं on the basis of their regional identity or regional issues. So what solutions or what steps should the government take to
stop this from happening so that the regionalism doesn't take a negative form. एक तो होता है हमने देखा पॉजिटिव रीजनलिज्म, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है रीजनलिज्म का, हमने पढ़ा। एक होता है नेगेटिव रीजनलिज्म। तो जो नेगेटिव सेंस है रीजनलिज्म का, या जो एक ये आउटसाइडर इनसाइडर का एक बहुत गंदा टेंडेंसी डेवलप हो गया बहुत सारे स्टेट्स में, दैट दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड, लाइक इन महाराष्ट्र में और कई जगहों पे। तो इस तरीके के जो रीजनलिज्म फीलिंग है, जो पीस एंड हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या एक जो फिसिफरस टेंडेंसीज डेवलप कर रहे हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, जो ऐसा वाला रीजनलिज्म है, बैड रीजनलिज्म, और कैसे जो नेगेटिव रीजनलिज्म है, नेगेटिव रीजनलिज्म को काउंटर करने के लिए, एक तो पॉजिटिव रीजनलिज्म हमने पढ़ा, नेगेटिव रीजनलिज्म को काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है कि द पॉलिटिकल पार्टीज दे शुड ट्राई टू अवॉइड पार्टिसनशिप, बिकॉज वी हैव सीन that there are lot of regional political parties who have formed on regional issues, and they are trying to divide the society. Okay, they are trying to divide and create problems as far as national integration is concerned, by kind of trying to give some undue profits or undue benefits to the region, to that particular region. Okay, by trying to show that we are trying to promote your regional interests, they are disturbing the national unity of India. So those parties should try to avoid this. Political parties, the appeals made to electorate based on regional identity must be stopped. Role of National Integration Council जो है, that must be revamped. We know that National Integration Council was formed to foster the spirit of foster the spirit of federalism, foster the spirit of unity and integrity of India. जो role है इसका National Integration Council का, that should be revamped to solve conflicting regional aspirations. यूनिफॉर्म डेवलपमेंट होना चाहिए सारे रीजन का, शुड बी टेकन अप सो दैट नो रीजन फील्स आइसोलेटेड एंड लेफ्ट बिहाइंड। वी नो दैट हमारे, अगर हम डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, ऑफ द 29 स्टेट्स, इतना ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटी है as far as the economic development of the region is concerned. There are a lot of states who lag behind the economic development and social development. Okay, whereas there are many states which are, far ahead of the other regions. So ऐसा क्यों है कि एक ही कंट्री में इतना ज्यादा मतलब disparity है as far as economic development is concerned? This should not be the case, and uniform economic development of all the regions should take place. Formation of नीति आयोग जो किया गया है, it's a very good step and a positive step to enhance cooperative federalism, and इसको और ज़्यादा promote करना चाहिए। जो cooperative federalism वाले steps हैं, इनको और promote करना चाहिए, to foster the involvement of state governments of India in the economic policy making process. Then other such जो cultural sensitization programs होते हैं, so that एक कल्चरल असिमिलेशन हो सके डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में, लोग एक दूसरे के स्टेट्स के कल्चर और रिलीजन को, या रीजन्स की आइडेंटिटी को, कल्चर को रिस्पेक्ट करे, जान सके, ऐसे कल्चरल सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को कैरी आउट करने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, ऑन दैट लाइंस, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड to celebrate unity and diversity and culture of the nation, and to strengthen sentiment of national unity between the citizens of states. That is a welcome step. And so such other more cultural sensitization schemes must be launched, so that कल्चरल जो यूनिटी है और नेशनल यूनिटी है जो इंडिया की बनी रहे, एंड एक स्टेट दूसरे स्टेट के रीजनल इश्यूज को समझे, एंड जो लोग हैं पीपल टू पीपल जो टाइज होता है वो एनहांस हो सके, एंड लोग एक दूसरे के कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करें। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए। यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो स्टेट में जो डेवलपमेंट की इनइक्वालिटी है वो उसको रिड्यूस करना होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना होगा। सारे स्टेट्स को अपना जो सोशल एक्सपेंडिचर है एजुकेशन हेल्थ पे वो हमेशा ज्यादा करना चाहिए, सो दैट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे लैक ना हो। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो कि बनाया है इसीलिए गया था कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग रीजनल एस्पिरेशंस को कंट्रोल किया जा सके, उसको रोल को हमें रिवैम्प करना होगा, बिकॉज ऑब्वियसली अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रीजनल एरियाज हैं जो रीजनल इश्यूज के बेस पे डिफरेंट स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस तरीके के इश्यूज को ऐसे हैंडल करना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजनलिज्म। इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, बट अगर आप इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, एंड अगर आप इसमें बहुत सारे और भी इश्यूज ऐड कर सकते हो अपने आप से, लाइक यू कैन स्टडी द इशू ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रीजनलिज्म। और भी बहुत सारे आप रीजनलिज्म के एट प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे रीजनलिज्म की क्या क्या डिमांड्स है, लाइक हमने तो गोरखालैंड वगैरह, बुंदेलखंड के बारे में, सबके बारे में डिस्कस करा, बोडोलैंड वगैरह के बारे में, बट आपको और भी अच्छे से पता होना चाहिए जो डिफरेंट रीजनल इश्यूज की वजह से रीजनलिज्म के डिमांड्स जो कंट्री में एट प्रेजेंट आते रहते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर रीजनलिज्म।
In the next lecture, we will continue with the topic of secularism and other such issues which are related to your Indian society. Like and then in the next lecture, before the beginning of the next lecture, I would even take question UPSC past UPSC question also related to regionalism. वो भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर कि एक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर का एक रीजनलिज्म या कम्युनलिज्म या सेक्युलरिज्म जब आफ्टर वी आर डन विथ all the three topics of communalism, regionalism and secularism, we will discuss a past year UPSC question related to the three topics वो discuss करेंगे and उसके बाद में we will take up more issues like population related issues या women related issues जो भी हैं. Okay, thank you so much.